Minister of Uttar Pradesh, Shri Yogi Adityanath ji, my brother Justice Manoj Mishra, my very dear brother Justice Rajesh Bindal, both judges of the Supreme Court of India, Justice Arun Bhansali, Chief Justice of the Allahabad High Court and Chancellor of the Dr. Rajendra Prasad National Law University, Prayagraj, Justice Ramesh Shanna, Chief Justice Chhattisgarh, Justice Devendra Upadhyay, Chief Justice of the Bombay High Court, Justice Manoj Kumar Gupta, judges, both brothers and sisters in the High Court of Judicature at Allahabad, Shri Ajay Kumar Mishra, Advocate General Uttar Pradesh, Shri Manan Kumar Mishra ji, Chairman Bar Council of India, Professor Usha Tandon, Vice Chancellor, Dr. Rajendra Prasad National Law University, Prayagraj, members of the faculty, members of the bar, students and all who are present here. मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम यहाँ एक विशेष अवसर पर एकत्रित हुए हैं। यह अवसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह का। मेरे लिए इस सम्मान का विषय है कि मुझे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विधि विश्वविद्यालय का उद्घाटन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इलाहाबाद में आप सबने मुझे अपनाया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद न सिर्फ हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष थे, बल्कि एक बड़े सम्मानित वकील भी थे। एक वकील के रूप में प्रयागराज से उन्हें बेहद नजदीकी संबंध रहे। कलकत्ता विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कानून क्षेत्र में पीएचडी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से की। भारत के संविधान बनने की प्रक्रिया में अपना मार्गदर्शन और योगदान देकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्वतंत्र एवं आधुनिक भारत की नींव रखी। संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभी सदस्यों को अपनी बात रखने का मौका दिया, जिससे भारत की संसदीय परंपरा की शुरुआत हुई। संविधान सभा के सभी सदस्य डॉक्टर प्रसाद को सम्मान की दृष्टि से देखते थे। यही कारण था कि जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुनने का मौका आया, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस पद के लिए सबसे योग्य माना गया। इस विश्वविद्यालय का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से जोड़कर हमने न सिर्फ डॉक्टर प्रसाद की विरासत को सम्मान दिया है, इसके साथ ही आने वाली पीढ़ियों को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विचारों से प्रेरित होने का भी काम किया है। इस मौके पर मैं विश्वविद्यालय की स्थापना से जुड़े सभी लोगों को बधाई देता हूं। खास तौर पर उत्तर प्रदेश शासन, मुख्यमंत्री जी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और सारे न्यायाधीशों को मैं बधाई देता हूं। यह एक सुखद संयोग है कि मैंने भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर लगभग 3.5 साल यहां बिताए। अपने कार्यकाल के दौरान मैंने न सिर्फ उच्च न्यायालय के सम्मानित न्यायाधीशों के साथ कई अहम मुद्दों पर काम किया, बल्कि प्रयागराज के गौरवशाली इतिहास के बारे में भी जाना। मैं अक्सर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में बिताए अपने समय को याद करता हूं। बंबई उच्च न्यायालय से में काम करने के बाद जब मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय आया, तो मैंने न सिर्फ इस उच्च न्यायालय बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परंपरा को भी समझा। मैं समझता हूं कि यहां आकर मेरे जीवन में विद्या ग्रहण का जो प्रयास था, वो एक दूसरे स्तर पर मैं ले जा सका। So that I always say Uttar Pradesh is the heartland of India. अपने कार्यकाल के दौरान मुझे कई जिलों में जाने का मौका मिला।
और मैंने जिला न्यायपालिकाओं से जुड़ी समस्याओं को समझने का प्रयास किया। Allahabad has remained a center for knowledge and exchange of ideas for centuries. The University of Allahabad, which was considered as the Oxford of the East, remains a beacon of knowledge since the last 137 years. स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख केंद्र के रूप में भी प्रयागराज उन अग्रणी शहरों में रहा जिसने आजादी के आंदोलन का हौसला प्रदान किया। महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य कृपलानी ने इस शहर को अपनी रणनीति का केंद्र बनाया था। शहर का अल्फ्रेड पार्क आज भी चंद्रशेखर आजाद की शौर्य गाथा के जीवंत उदाहरण है। This city is also associated with the names of several individuals who made a mark in the legal profession. साहित्य, कला, तहजीब, संस्कृति एवं कानूनी परंपरा को समेटे इस शहर में आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना से न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी, बल्कि शहर को भी एक नया आयाम मिलेगा। ये अवसर न सिर्फ हमें कानूनी शिक्षा के बढ़ते आयाम के बारे में बताता है, बल्कि यह भी याद दिलाता है कि कानूनी शिक्षा के क्षेत्र में व्याप्त चुनौतियों को दूर कर सके। इसके साथ साथ आज के इस भाषण में मैं समाज में वकीलों की सकारात्मक भूमिका, विधि शिक्षा के उद्देश्य, विधि शिक्षा में व्यावहारिक एवं संरचनात्मक चुनौतियों एवं उससे आगे बढ़ने के उपाय के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। First, about the role of lawyers. Since the Indian independence movement to the constitution making process and to contemporary Indian politics, lawyers have significantly contributed to nation building. We always feel that our role is to wear our bands and black coats and get the injunction of stay order or the bail for a client. That is important in itself because you do justice to the immediate cause at hand. But there is a wider process of nation building in which lawyers have a very vital role to play. Lawyers play a crucial and multifaceted role in society, contributing to the functioning of legal systems and promoting justice. They represent individuals and entities, ensuring that their rights are protected. This includes criminal defense, civil litigation, and advocacy for various legal issues. The role of lawyers includes representation of the marginalized and vulnerable communities, ensuring that they have a voice in the legal system. Every day in the work of the Supreme Court, we come face to face not only with injustice, but the quest of justice which is sustained by lawyers, pursuing causes which are popular and unpopular, clients high and low, clients who have a voice in the system thanks to the work of the bar. The engagement of lawyers in pro bono work, providing free legal services to those who cannot afford it, is a crucial function of lawyers in society. Sir Ashutosh Mukherjee, a noted jurist and barrister, remarked, "A lawyer is more than a mere agent or servant of his client. He is also an officer of the court, and as such he owes the duty of good faith and honorable dealings to the courts, before which he practices the profession." What Sir Ashutosh Mukherjee said decades ago holds true, with only one little variation, that where we have said he, we must now say he or she, because this profession today is as much a representative of women in society. Thus, lawyers are entrusted with this obligation of being a carrier of the principles of justice. Dr. Babasaheb Bhimrao Ambedkar, writing about public service and legal practice, said, "Legal practice and public service are thus the alternating currents in my life. I do not know on which current my life ends, whether AC or DC. Thus, much like alternative currents,
The life of a lawyer must be characterized by the constant oscillation between the realms of legal practice and public service, each exerting its unique influence in shaping society. MC Setalvad, the great jurist, also said, "We must not forget that we are a body of men whose essential function is to serve the nation. As the nation turns to its trained medical men or scientists to look after its health and scientific growth, so does a nation need lawyers to help in the administration of its justice and the building up and working of its laws." These thoughts emphasize on the indispensable role of lawyers as guardians of justice. I have quoted the words of a few legendary figures in our legal fraternity to inspire the young students to take up the study of law as a career choice with an open mind. Young law students must instill a sense of purpose, curiosity, and commitment to excellence, thereby enriching the fabric of the legal profession and advancing the cause of justice in society. Let me speak briefly about legal education in society. We have to re-emphasize that the legal profession is interconnected with the outlook of legal education. The shape and status of legal education determines the character of the legal profession. It is legal education which paves the way in the direction in which the legal profession will move. Law school shapes the character of every law student and consequently the character of the legal profession. The objective of legal education is to enable law students to acquire professional skills as well as assimilate responsibilities of a public service provider as a responsible citizen of the nation. The dual role of lawyers as professionals and social service providers can only be possible if law schools impart interdisciplinary and diverse education involving multiple subjects relevant in today's changing world. Dr. Ambedkar, writing on the thoughts on the reform of legal education in the Bombay Presidency, stressed the importance of interdisciplinary studies. He wrote, "From the educationist point of view, the study of law requires a study of certain other auxiliary subjects, without which the study of law alone would be incomplete equipment for the practice of the profession. What these auxiliary subjects should be will not be difficult to enumerate if you remember that a lawyer must have a legal mind. May I respectfully add that a lawyer must also have a social mind. To this I add that the focus of legal education must not only be on interdisciplinary studies, but on pragmatic legal education. Law schools must develop strategic plans that accommodate the changing market realities and clearly articulate their vision for the administration of justice. This National Law University must, in designing its policies, understand its responsibilities in the context of the evolving social landscape in Uttar Pradesh. What are the new demands which industries are setting up for qualified legal professionals? What is the role of legal professionals in the changing social transformation in this state? And it is from that context that we must equip our young lawyers to be torchbearers for the future. Building a system of legal education that encourages interdisciplinary approaches to law with other social sciences ought to be the aim of law schools. A student of law also needs to be knowledgeable about political theory, economics, philosophy, and the history and culture of the nation in order to be able to influence institutional changes. The teaching of law in India has undergone significant developments over the years, but it also faces several challenges that warrant critical examination. The establishment of national law universities across the country has been seen as a positive step towards providing specialized and high-quality legal education. These institutions, known for their competitive admission processes, have contributed to raising the standard of legal education, but also remain limited in accessibility and effective social contribution. एक तरफ
जहां हम नए विषयों जैसे कि स्पेस लॉ, टेक्नोलॉजी लॉ आदि पर बात करते हैं, दूसरी ओर इसी बात पर भी जोर देने की जरूरत है कि यह सब विषयों पर बातचीत एनएलयूज तक ही सीमित ना रह जाए। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि कानूनी शिक्षा में जो बदलाव आ रहे हैं, इनका असर हर विश्वविद्यालय और कॉलेज पर होना चाहिए। शिक्षा की गुणवत्ता सभी विश्वविद्यालयों में एक समान होनी चाहिए। So let the education which is taught at this particular National Law University reach out to other students who may not be as fortunate to come to Prayagraj, in the smaller towns of Uttar Pradesh, in the smaller towns in other states, because technology has given us that ability to reach to students beyond the physical space. बार काउंसिल से संबंधित देश के अन्य कॉलेज, खास तौर पर ग्रामीण भारत के लॉ यूनिवर्सिटी एवं कॉलेज में हमें शिक्षा के नवाचार से जुड़े प्रयासों को बल प्रदान करना चाहिए। Despite the developments in legal education, the contemporary Indian legal education system only favors certain English-speaking urban students. The data from diversity surveys of 5 national law universities, which came into existence much before, reveals that the composition of law schools in terms of gender, region, and the premium attached to the fluency of the English language and a stigma for a lack of knowledge of English language among students acts as a hindrance to the full participation and assimilation of students coming from diverse backgrounds. आज टेक्नोलॉजी के तहत भाषिणी सॉफ्टवेयर के द्वारा हमने 1950 से 2024 तक सर्वोच्च न्यायालय के करीब 36,000 निर्णयों को अनुवादित किया है। अंग्रेजी भाषा का तो उपयोग सर्वोच्च न्यायालय में होता है, क्योंकि हर एक राज्य से लोग आते हैं यहाँ पर वकालत करने। कई बार जब मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस था, तो अंग्रेजी इस सीमित रहती थी, मे इट प्लीज योर लॉर्डशिप्स। उसके बाद सारा हिंदी में ही डायलॉग होता था, और मैं अपनी बम्बईया हिंदी में मैं भी अनुवाद करता था उनके साथ। पर कहने का तात्पर्य यह है कि आज हमने जो 36,000 निर्णयों का अनुवाद किया है, इसका कारण यह है और इसका उद्देश्य यह है कि हम हर एक नागरिक को, जो कि अंग्रेजी जानते नहीं है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, उन तक विधि को हम उनके घर में, उनके हृदय में, उनके द्वार पर हम ले जाएं। और ये मुफ्त सेवा है, डिजिटल एससीआर मुफ्त सेवा है। आज आपको किसी प्राइवेट पब्लिशर को साल के 50,000 रुपए देने की जरूरत नहीं है। ये मुफ्त सेवा और क्वालिटी सेवा है। मुफ्त यानी क्वालिटीहीन सेवा नहीं है, क्वालिटी सेवा है जो सुप्रीम कोर्ट आपके लिए प्रदान कर रही है। तो हर एक विश्वविद्यालय में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, बाकी राज्यों में आप इसका जरूर उपयोग लीजिए। Even the opportunities such as internships, moot courts, and competitions are conventionally designed to favor students coming from the elite and English-speaking backgrounds. Therefore, college campuses must be a ripe setting for a culturally diverse student population. They must provide a dynamic place where differences in opinion and beliefs interact. Rabindranath Tagore remarked that an educational institution should not be a dead cage in which living minds are fed with food that is artificially prepared. The purpose of a university education is to cultivate wisdom, judgment, and virtue in students. And I appeal to the Prayagraj and Dr. Rajendra Prasad National Law University to ensure that the medium of instruction takes place in Hindi, so that the best students from Uttar Pradesh will become the best lawyers who will practice before the High Court. Many of them will join the district judiciary. Some of them will join politics. Others will do what they want to do, but they will keep the great cultural and historical tradition of our state burning bright.
The lack of diversity in our education institutions fails to create both virtues and generate social benefits. Research has shown that institutions with more diversity are more likely to produce an inclusive, vibrant, and democratic citizenry. It improves learning outcomes, citizenship, and cultural engagement among students. A comparative report recently published has shown that students report less discrimination and bias at institutions where they perceive a stronger institutional commitment to diversity. Schools that have diversity on college campuses and including mentoring and counseling for students create more productive environments for everyone. जब हम शिक्षा के क्षेत्र में बराबरी की बात करेंगे, तब ही समाज में बराबरी की बात आगे बढ़ेगी। शिक्षा के माध्यम से लोगों को अपने अधिकारों और दायित्वों का बोध होता है। इससे वे समाज के सकारात्मक बदलाव में सक्रिय भागीदार बनते हैं और अपने व्यक्तिगत और सामाजिक उत्थान के लिए काम करते हैं। So it is only when we provide equal opportunities to everyone, access to education, are we preparing them for access to equal opportunities and employment. By prioritizing equal opportunities and access to education, our society will pave the way for a more inclusive and equitable future where every individual has the chance to thrive, succeed, and contribute to the collective prosperity of society. Thus, at this auspicious moment of the inauguration of a new university, we must commit ourselves that the space of the university will be free from marginalization and will ensure the effective participation of students coming from diverse backgrounds, as these are the core principles on which educational institutions are premised. इसके साथ साथ मैं एक और महत्वपूर्ण बात पर जोर देना चाहूंगा जो प्रख्यात लेखक मुंशी प्रेमचंद ने कही थी। मुंशी प्रेमचंद का जन्म बनारस में हुआ था। उन्होंने कहा था कि हमारी शिक्षा व्यवस्था सामाजिक चेतना नहीं जगाती है, ये व्यक्तिगत हितों का एक माध्यम बनकर रह गई है। प्रेमचंद ने आगे लिखा कि विश्व भर में व्याप्त शिक्षा व्यवस्था ने डर, ईर्ष्या, स्वार्थ से मानवीय भावनाओं को बढ़ावा दिया है। आपने सबने गबन तो पढ़ा ही होगा। मैंने बहुत 7-8 बार स्कूल में गबन का उपन्यास पढ़ा था। आज के दौर में प्रेमचंद की बात कितनी सही और कितनी गलत है, ये सोचने के लिए मैं आप पर छोड़ देता हूं। पर इस बात पर जोर देता हूं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य मानवीय भावनाओं को समझना, समर्थन करना और उन्हें संरक्षित करना होना चाहिए। इससे लोगों के बीच संबंधों में सहानुभूति, समझदारी और सहयोग के मूल्यों को बढ़ावा दिया जा सकता है। शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से हम समृद्ध और सहयोगी समाज की नींव रख सकते हैं, जो भावनात्मक संवेदनशीलता, समर्थन और सहयोग पर आधारित होता है। आज जब हम सब एक नए विधि विश्वविद्यालय के शुरू होने के अवसर पर एकत्रित हुए हैं, तो हमें यह सोचने की जरूरत है कि हम विधि शिक्षा को किस ओर ले जाना चाहते हैं। एक विश्वविद्यालय को समावेशी एवं दूरदर्शी होने के साथ साथ भविष्य की आने वाली चुनौतियों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में समय के साथ बदलाव, हाशियों के समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व देना, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को संस्थानिक उपायों के जरिए मुख्य धारा में शामिल करना, मेन स्ट्रीम में शामिल करना, उनकी क्षमता में वृद्धि और अवसरों की समानता सुनिश्चित करना एक विश्वविद्यालय का उद्देश्य होना चाहिए। Today, with the establishment of the National Law University in Prayagraj, the state of Uttar Pradesh now has 2 national law universities. One in Lucknow, the Dr. Ram Manohar Lohia National Law University, and one in Prayagraj. The NLU in Lucknow was established almost 2 decades ago. Several graduates of NLU in Lucknow have worked in my own chambers as interns, as law clerks. Many graduates qualified for the judiciary, while many are practicing before different courts, and are a source of great pride to us. I am hopeful that NLU in Prayagraj will follow a similar trajectory, or even better it. What better than competition between 2 national law universities in the same state? Furthermore, it is now the task of these 2 national law universities in Uttar Pradesh
to take a lead in shaping the discourse on legal education, to provide necessary support to other universities and colleges in the state. It is only with the collaborative efforts between the institutions that we will be able to make necessary changes in the affairs of legal education and the legal profession. This is the beginning of a new dawn for this newly established university. I hope it will establish a new standard in legal education and will emerge as a center for excellence in education. अंत में मैं आपके साथ संत कबीरदास के एक दोहे को दोहराता हूँ। अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। मतलब संत कबीरदास जी कहते हैं कि ना तो अधिक बोलना अच्छा है, हम जैसे जजेस को ये आदेश है, ना ही अधिक चुप रहना भी ठीक है। मैंने आज आपके समक्ष बहुत सारे मुद्दों पर अपनी बात रखी और अब संत कबीर की बात को दोहराते हुए और अधिक नहीं बोलूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद देता हूं। Allahabad High Court and the city of Prayagraj are truly like my second home. I owe everything. I owe everything to have had the good fortune to have lived for almost 3 years in this blessed land. And I always feel elated to come to the city. Thank you. Namaskar.